Welcome back to the Darshan channel. Today we'll be discussing the 19 rules of inference. So 10 rules we have already discussed. So today we'll be discussing the remaining rules, which are the rules of replacement. So replacement in a sense that we can replace it. जैसे first let's start with the De Morgan theorem. So De Morgan का abbreviation is DE and M dot. So if there's any form in this particular form, negation of p dot q, so you can just replace it with negation p which negation q. So again, जो आपका rules of inference था, so we used to have premises p or q, p therefore q. So we used to have premises and conclusion. So एक proper argument बनता था. So यहाँ पे it's simply that you can replace it. So moving to the next one is again De Morgan में we have two, negation of p which q, negation p dot negation of q. Commutation is very simple. You just have to change the position. p q है तो q p. And then in case of dot also pq hai qp, so we are just replacing the place, and this means that it is equivalent. यहाँ पे try bar t लिखा है, that means it is equivalent. If this value is true, so this value also will be true. ये अगर false होता तो ये भी आपका false होता. So the value is equivalent in that sense. Now next is association. So association में again we are just changing the bracket. Just say let's take a question 2 plus let's say 3 plus 5, and then if you are replacing it 2 plus 3 plus 5, so आंसर आपका दोनों का सेम आएगा इन अ सेंस दैट अगर आप यहाँ पे प्लस करते हो 8 हो जाता, 8 plus 2, again 8 plus 2 is 10. यहाँ पे if you see 5 plus 5, again it will be 10. So दोनों का आंसर आपका सेम आता. Similarly this is the same case in dot as well. So again wedge हो या dot हो, so you can just change the bracket. Next is distribution. Distribution is more like multiplication. जैसे अगर आपका given है 2 into let's suppose 3 plus 5, so you can write this as 2 into 3 plus 2 into 5, and then let's see the answer. 8 into 2, 8 2s are 16, and यहाँ पे है 3 2s are 6, 5 2s are 10, and the answer is 16. So दोनों का value same है. Similarly यहाँ पे उसका दोनों का truth value would be same. So that is how you can remember distribution, and it's easy to apply. Next is double negation. Double negation again दो negation है या फिर p is equal to negation p. अगर negation p है तो you can simply write p by using the double negation formula. Next is transposition. Transposition again जैसे कि in case of p dot q आपका commutation से q p के जगह पे आ जाता है, and same is the case with wedge. But in case of horseshoe आपका negation हो जाएगा, p horseshoe q negation और negation q horseshoe negation of आपका p आ जाएगा. Now implication is again a formula which is being used several times. So p horseshoe q है, so if you want to change horseshoe into wedge, so you can simply change it by negation p wedge q. Material equivalence, again this is important because this will be used several times. In the case of stock function also ये आपका use होगा. So this is again a formula which you can memorize. p horseshoe q is p horseshoe q, q horseshoe p, p dot q negation p dot negation q. So this is again an important formula. Next is expectation. p dot q horseshoe r can be changed into p horseshoe q horseshoe r. And next is tautology, which is easy. p है तो p wedge p लिख सकते हो, and then again p को p dot p भी लिख सकते हो. So again tautology is very simple. So इसमें भी like there are some tricky, जैसे if you're जैसे एक्सपोर्टेशन हो गया या फिर ट्रांसपोजिशन हो गया, इम्प्लीकेशन हो गया, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट, बट विथ प्रैक्टिस आपका बहुत ईजी हो जाएगा. इट वुड बी वेरी ईजी. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग one step argument, state the one rule of inference by which its conclusion follows from its premises. So again this is the premise and this is the conclusion. Now if you see premise में a horseshoe b है, a horseshoe b है, कोई भी change नहीं है. But if you see the second case, c horseshoe d and negation c horseshoe negation d. So again this is in which form? इस form में है.
सो इफ़ यहाँ पे इफ़ पी हॉर्शू क्यू है तो नेगेशन क्यू नेगेशन पी हो गया. सो ट्रांसपोजिशन आपका इसमें लगाया. सो सिंपली यू हैव टू राइट ट्रांसपोजिशन. नेक्स्ट if you'll see E horseshoe F, G horseshoe H. So again in this case जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें चेंज है. हॉर्शू की जगह वेज यूज़ हुआ है, नेगेशन वेज, राइट. सो यहाँ पे आपका इम्प्लीकेशन यूज़ किया. सो यू कैन सिंपली राइट इम्प्लीकेशन. नेक्स्ट आपका इफ़ यू सी नंबर थर्ड आई हॉर्शू जे हॉर्शू के एंड दिस वन इज सेम. सो इसमें चेंज हुआ है एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन. अगेन आप फॉर्मूलाज भी देख सकते हो. सो पी हॉर्शू क्यू हॉर्शू आर दैट इज इक्विवेलेंट टू पी हॉर्शू क्यू हॉर्शू आर. सो अगेन इट इज़ इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म. नेक्स्ट आपका है दोनों सेम है. इफ यू सी दिस वन एंड दिस वन, अगर ये आपका P है सो लेट सपोज दिस इज ऑल्सो P वेज P से आपका P आ रहा है. सो दिस इज सिंपल टोटोलॉजी. नेक्स्ट अगेन इफ यू सी P हॉर्शू Q Q हॉर्शू P ट्राई बार Q. सो अगेन यहाँ पे डायरेक्ट ट्राई बार का फॉर्मूला यूज़ किया. सो P ट्राई बार Q. सो मटीरियल इक्विवेलेंस. नेक्स्ट इफ़ यू सी यहाँ पे डी मॉर्गन यूज़ हुआ है. सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है. So negation R which S, negation R dot negation S. So simply we have used De Morgan here. So you can right side में लिख सकते हो De Morgan. So again if you see in this question, so आप replace कर रहे हो. If you see the antecedent is being replaced by this और consequent में कोई change नहीं है. So इसीलिए it's rule of replacement. रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट. नाउ मूविंग टू द सेम वन, यहाँ पे भी अगेन सेम एक्सपोर्टेशन यूज़ किया है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ़ यू सी वी हैव टेकन दिस होल एज कॉमन इन द सेंस दैट ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लगा है दिस वन एंड देन इफ़ यू टेक दिस वन एज P डॉट Q which R. So again P dot R, sorry P dot Q which P dot R. So again इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हुआ है. Now moving to the next one, double negation. A से double negation of A. Number 10 is again easy. C dot D dot E, C dot D dot E. So इसमें कोई change नहीं है but in first वाले में change है. So if you see the bracket is being changed. So इन यहाँ पे आपका association use होगा. नेक्स्ट में अगेन इट इज़ सेम एज इम्प्लीकेशन जो पहले क्वेश्चन यहाँ पे भी किया था. सो नेगेशन ऑफ एफ वेच जी यहाँ पे आपका इम्प्लीकेशन यूज़ होगा. सेम आपका फॉलो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में. इफ़ यू सी यहाँ पे देयर इज़ नो चेंज. सो नेक्स्ट पार्ट में ये आपका पी हॉर्शू क्यू इज़ बीइंग रिप्लेस बाय क्यू हॉर्शू पी, दोनों के साथ नेगेशन है. सो अगेन यू नो कौन सा फॉर्मूला है दिस वन इज़ this particular formula which is transposition. So again formulas you have to memorize so it will be easy for. Next moving to the next one, again there's no change here but there's change here and negation के साथ. So ये आपका first formula है negation of P dot Q bracket में is equivalent to negation P which negation Q के form में. So इसी तरह से you simply have to solve the questions. Now we have some more questions. So again this if you'll see the bracket is being changed, so you know it is commutation. In this particular case you know distribution है. R which S को अगर आप P लेते हो इसको Q and this one is R. So again you can simply use distribution. So again in this particular case also what P again this term is being repeated twice. So again P से आप क्या लिख सकते हो, this equivalent P dot P. So again this is the case. Next में you have used the formula this one as P and this one as Q. So again the formula is negation of P dot it's P dot Q negation of P dot negation of Q. So again ये आपका material equivalence वाला formula direct apply हो रहा है. Next if you see यहाँ पे there's use of double negation. Moving to the next question, again there is H dot this one and H dot this one. So again H if you'll see is common in both, so this is being taken as common and आपका P वेच आ रहा गया. तो यहाँ पे again आपका distribution यूज़ हुआ है. So again this is P, this is Q and this one is R. So again इसमें distribution यूज़ हुआ and the last में De Morgan. So यहाँ पे change है आपका. So simply De Morgan is being used.
we have question number 6. Question number 6 में if you'll see, we have t dot u wedge v and then t horseshoe u horseshoe w dot z. So इसमें if you'll see the second part, second में if you'll see, second में आप easily expectation लगा सकते हो. Second में it will be t dot u and then w dot z. नेक्स्ट पार्ट में if you see नंबर 5th में इन्होंने डी मॉर्गन लगाया, थर्ड में डी मॉर्गन. सी यहाँ पे इस पार्ट में डी मॉर्गन यूज किया है, सो डायरेक्ट डी मॉर्गन आपका यूज होगा. एंड देन द कंजंक्शन ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ का कंजंक्शन. And after conjunction, you can see the first part. First में distribution. First का distribution. Distribution का formula is t dot u wedge t dot v. And then if you see carefully, यहाँ पे आपके पास t dot u है, यहाँ पे t dot v है. यहाँ पे you can use constructive dilemma. So constructive dilemma से आपका 6 और 7 में constructive dilemma use होगी. And then after that you have used tri-bar, that is 8 में material equivalence. Now जो आपका next exercise है, next question है. So in the next question we have 3 का equivalence. Third का equivalence, material equivalence लगाओगे तो this thing will come. And then 5, 4 का अगर आप disjunctive syllogism लगाओ, 5 and 4 का disjunctive, that is P wedge Q negation of P therefore Q. So ये आपका आंसर आ जाएगा. And then moving to the next one, number 8. Number 8 में first comma second में edges आप लगा सकते हो, because both z आपका common है तो आप ये लगा सकते हो. And then again number 8 में you have expectation. And then after expectation, y दोनों में y common है, so you can simply write y by using tautology here. So यहाँ पे tautology आ गया. And the last one is 10th, 7 का modus tollens. 10th, 7 का modus tollens. So आपका final answer आ गया यहाँ से. Now number 8. Question number 8 में we have first comma second का hypothetical syllogism. And then in the next part we have conjunction of 5 and 3. If you see 5 and if you see 3 here, तो दोनों का यहाँ पे conjunction कर सकते हैं. And then if you do conjunction here, so conjunctions equivalence आप formula लगा सकते हो. तो यहाँ पे tri-bar जहाँ पे भी है, तो we have only one formula, material equivalence. And then again यहाँ पे material equivalence के because P so P tri-bar, क्योंकि we have two formulas, first and second formula. So यहाँ पे second formula जो आपका dot वाला formula है, that is being used here. And in the number 9th one we have used implication. 4 का if you check, 4 का implication. 4 में implication करोगे तो horseshoe से will get wedge. So 4 में implication. And then again we have De Morgan here. And then again we have used disjunctive syllogism. 8 and 10 कर देते हैं disjunctive syllogism. 8 and number 10 disjunctive syllogism. And then your final answer is here. Now इसमें again we have used this formula equivalence. So equivalence, material equivalence, there is just one formula which is being repeated. And then again simplification, this is easy. Simplification के बाद absorption, so again this is important. Absorption आपने यहाँ पे use किया. And then 6 and 1 में if you can directly 6 or 1 में you can see that we can use hypothetical syllogism. 6, 1 में edges आपने use किया. And उसके बाद second का if you check, second में distribution is being used. Second का distribution. And then again simplification is being used. Simplification के बाद double negation because यहाँ पे f है, double negation है तो f. And then again implication is being used here. And 7, 11 में disjunctive syllogism. Check again 7, 11 में disjunctive syllogism.
Then we have again second में expectation. Let's check second का. If you'll see, this is second L. Second का if you'll see L horseshoe, L dot j is given. So again यहाँ पे if you'll see, यहाँ पे see we have expectation in the second part. यहाँ पे we had I dot negation of L. यहाँ पे we have in this form. So the formula is P horseshoe Q horseshoe R, which is being changed into therefore P dot Q horseshoe. So यहाँ पे यही same formula is being used. And then उसके बाद if you move on to the next one, first का आप check कर लीजिए. First में double negation है and then we don't have double negation here. तो यहाँ पे double negation use किया है. And then after using double negation, K का place change हुआ. So again commutation is being used here. Again K का place change है, तो you have used commutation. And then moving to the next one, sixth का आप देख लीजिए. Sixth में distribution is put I dot j which I dot j. So यहाँ पे sixth में distribution is used. Number eighth में seventh का commutation is being used. Nine में again if you check, nine में 4 and 7 का constructive dilemma is used. 4 is here and 7th is here. 7th. So again I dot j, I dot I, K dot I and K dot j is common here. So दोनों में which है. And then constructor formula is P horseshoe Q dot R horseshoe S. And then if we have P wedge R, so we can find Q wedge S. So ये question में directly आपका fit होगा. And then ninth, उसके बाद this is easy. Ninth का commutation लग गया. And then again double negation because we don't have negation here, double negation. And end में D